Hi, hello everyone. Welcome to the Rise Mental Health Talks. Today we have Dr. Madhur Rathi, consultant psychiatrist, who is going to talk about mental health. What are some of the facts and fallacies around mental health? And we are going to deep dive into the world of mental health overall. So, Dr. Rathi, welcome and thank you so much for joining us today. Thank you so much, Palay, for having me over. Thank you. So Dr. Rathi, apart from being a consultant psychiatrist, is also a social media influencer. So he is working on, demystifying mental health for people like us who do not have much idea around it. So I'm going to ask Dr. Rathi, what is it that inspires you on daily basis, to come on social media and spread some awareness? I think everything that I see in my work day in and day out, that is what inspires me to come on social media and talk about mental health. I would say I'm not an influencer, I'm an influencer. I want to spread information. I don't want to influence people because there is so much, scarcity or lack of proper scientific mental health related information on social media in the world around. And because of that, the patients that I see in my hospital, the patients that I see in everyday practice, that is what makes me feel the pain that, अरे यार ये इंसान अगर पहले आ जाता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, इसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, इसके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, इसकी फैमिली को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती. And why they did not come? Because they just believe somebody who said कि अरे कुछ नहीं होता, चलते रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, सबको होता है, और it's not a big deal, और दवाई लेने की जरूरत नहीं है. And these kind of things which are very rampant, very common, these myths which are very common in the world in around us, इसकी वजह से इतने लोग सफर कर रहे हैं. And they continue to suffer. They just think नहीं ये करने से कम हो जाएगा, वो करने से कम हो जाएगा. They try everything, Yeah, right? जब इंसान डूबता है तो वो हाथ पैर तो मारता है, yeah, बट अगर तुम उसको प्रॉपर सपोर्ट उसी टाइम पे दे दो, yeah. then it is very likely that they would be able to recover and come out of it very nicely. And that is something that actually inspires me to come on social media and spread that knowledge. Because when I was on social media, I mean, I pretty much was using I made my own Instagram account public and Yeah. started creating content because I realized कि बहुत सारे लोग हैं who are not qualified enough to talk about mental health, not knowledgeable enough to know about psychology or mind or human body, but they come and they are just spreading lies and talking about things with so much confidence. And because they are editing अच्छी है, रील अच्छी है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो लोगों को लगता है नहीं सही बोल रहा होगा. एंड दैट्स व्हेन Correct. आई रियलाइज कि अगर मुझे नहीं भी एडिटिंग आती है, नहीं भी मेरा स्क्रीन प्रेजेंस अच्छा है, बट मुझे बात करनी है, बिकॉज somebody has to come out and speak about the scientific knowledge that is there, about the valid things that are there. क्योंकि अगर लोग layman को believe करेंगे, तो it is more likely that they would listen to somebody who's talking about scientific facts, because वैसे भी काफी लोग हैं मेरे जैसे, आपके जैसे, who want to know the right kind of information. Exactly, exactly. Very, very well said. So I think I will start with a very basic question. It may sound really, really basic, but I wanted to ask you, what is mental health versus mental illness? Okay, mental health is everything. मतलब आप अभी let's compare it with the physical health, right? अगर मुझे कहीं पे भी थोड़ा सा दर्द हो रहा है, मेरे दांत में भी दर्द है, राइट, आई नो कि मुझे वो दर्द है, आई नो आई एम नॉट एट माई 100%, आई नो दैट देयर इज समथिंग विच इज बॉदरिंग मी. Right, दैट इज फिजिकल हेल्थ, राइट. बट व्हेन यू डू एक्सरसाइज डेली, व्हेन यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ होलसमली, आप ठीक से खा रहे हो, सो रहे हो, आपको पता है यहाँ मुझे हेल्दी फील होता है. कई बार बॉडी की कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट आपको फील नहीं होता है कि आप हेल्दी है, right, राइट. यू फील फटीग और यू फील टायर्ड और यू फील हेवी, और आपका आपकी बॉडी में आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, आई डोंट रियली वांट टू डू एनीथिंग राइट नाउ. सो यू आर नॉट physically ill, but you're not at your 100%, right? And WHO defines health complete is a state of complete physical, psychological, mental, and social well-being, and not merely absence of disease. So it just doesn't mean आपको disease नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप healthy है. It okay, should be it should be all the spectrum: social, physical, psychological, all spectrums when they are at their best. That is when we say a person is healthy. And उसमें से an aspect is mental health. If there's something constantly bothering you, if there is something which is constantly, you get anxious, you're not able to sleep properly, आपको भूख नहीं लग रही, आपका मूड ठीक नहीं है, आपको साइकोलॉजिकल हमेशा डिस्टर्ब फील होता है, हमेशा
छोटी छोटी चीजों पे आप ट्रिगर हो जाते हो, इट मीन्स यू आर नॉट इन योर परफेक्ट मेंटल हेल्थ. You're not Right. able to make sense of your emotions. You have to suppress your emotions, or you get triggered very easily, or you don't understand. छोटी छोटी चीजों पे रोना आ जाता है या छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा आ जाता है. तो कई बार ये चीजें नॉर्मल लाइफ में भी होती है ना, नॉर्मली भी होती है. इट्स नॉट इलनेस. Yeah. इलनेस हम तब बोलते हैं जब ये सब चीजों की वजह से आपका डेली फंक्शनिंग हैम्पर हो रहा Okay. Okay. है, राइट. सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिफाइनिंग अ मेंटल इलनेस. हम जनरली मेंटल डिसीज नहीं बोलते, हम डिसऑर्डर बोलते हैं. Disorder. Okay. Dis-ease, dis-ease is when the ease of life is disturbed. Okay. So if I have fever, I can still go to my work. I won't be at ease, right? But I can do that. मतलब कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगा. बट डिसऑर्डर क्या होता है कि आपके लाइफ का एक जो ऑर्डर है, एक सीक्वेंस है, द वे थिंग्स आर हैपनिंग, द वे थिंग्स आर सपोज टू हैपन, कि मैं सुबह उठूंगा, ब्रश करूंगा, रेडी होके कैब लूंगा, गाड़ी लूंगा, बस लूंगा, ऑफिस जाऊंगा, हॉस्पिटल जाऊंगा. देयर इज अ सेट ऑफ वर्क दैट आई एम सपोज टू डू, सेट ऑफ आउटकम्स दैट आई एम सपोज टू रीच. प्रोडक्टिविटी जितनी होनी चाहिए उतनी होनी चाहिए, एंड दैट इज व्हाट वुड फुलफिल माय सेटिस्फैक्शन एज माय वर्क क्वालिटी. उसके बाद आई हैव टू कम बैक, स्पेंड सम टाइम विद माय फैमिली, डू सम थिंग्स फॉर माय ओन सेल्फ, एंड स्लीप, and have a quality sleep so that next day morning when I wake up, I feel fresh to be able to do this again. Now, this is the order of my life. जब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, जब मेंटल इलनेस होता है या डिसऑर्डर्स होते हैं, तो ये ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है. नाउ Okay. व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई फील एग्जॉस्टेड, आई फील लाइक मेरी नींद ही नहीं है. दिन भर मुझे ऐसा लगता है अभी नहाना है, ब्रश करना है, छोड़ो यार, मन नहीं हो रहा है, ऑफिस चले जाते हैं. आई जस्ट गो, आई गो देयर, आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू एनीबॉडी, आई सिट टू डू माय वर्क एंड आई फील लाइक मन नहीं लग रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा हूँ. कोई आके कुछ बोल देता है तो मेरे उससे झगड़े हो जाते हैं, मैं उस पर चिल्ला देता हूँ कि यार क्या तुमने लगा के रखा है. And then I come back home. I don't want to spend time with my family. I would prefer to, have a bottle of alcohol and, just do doze off. Now, this is not the order that is supposed to be. And what Yeah. here is happening is there is socio-occupational impairment. ना मेरी productivity है occupation में, ना मेरा social functioning ठीक से चल पा रहा है. So whenever there is socio-occupational impairment, it's a disorder. Now, there can be anxiety disorder, there can be substance use or addictive disorders, there can be depressive disorder, mood disorder, psychotic disorder, eating disorder, personality disorder. अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर्स है. तो Okay. हम, और ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, इसलिए क्योंकि लोग बोलते हैं ये तो नॉर्मल है. Yeah. ठीक है, कभी मन नहीं होता है, बड़ी बात क्या है. बट अगर वो मन आपका 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने तक नहीं हो रहा है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होगी. आपका बॉस बोलेगा भैया तुम चले जाओ, तुमसे Yeah. नहीं हो पाएगा, राइट. और तुम यहाँ रहोगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, हमारे ऑफिस को लॉस हो रहा है. सो व्हाट दैट वुड डू इज इट वुड हैम्पर योर वर्क, देन इट वुड हैम्पर योर फाइनेंसेस, देन दैट वुड हैम्पर योर फैमिली लाइफ, एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स percolating. एंड इफ Right. दैट इज आइडेंटिफाइड एंड ट्रीटेड एट इट्स ऑनसेट, तो ये आगे का जो भी प्रॉब्लम होने वाला है अगले 2-4 महीने में, वो नहीं होगा. Got it. Right. Yeah. So this is mental illness. Okay. This is an illness. This is a disorder where the daily functioning is getting hampered. Okay. And Okay. mental health is when you are able to make the most of your life, be productive, have healthy relationships, make sense of your emotions, be able to accept all the emotions that are surfacing up, and be able to understand your own self, be able to strive for your own growth, be able to work towards an outcome. These Okay. are all different facets that say that you're in a mentally healthy state. Got it. Got it. So, as you said, socio occupational disorders, and for a long time, if I feel like I'm not able to function as I was before, so I may identify it as, something is going on. But how exactly will I know if I need to go to a psychiatrist or psychologist? What is the difference? हाँ, तो कैसा है ना कि आप दोनों के पास जा सकते Acha. हैं, राइट. इट्स अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन कि लोग बोलते हैं यहाँ जाना है, यहाँ जाना है. मैं बोलता हूँ कहीं तो जाओ, Okay. राइट. In an attempt to make the right choice, if you don't end up making any choice, you still continue suffering. A Okay. good psychologist will know कि यार ये मेरे डोमेन का नहीं है, दिस इज सीवियर इनफ. हम Right. जनरली बोलते हैं कि बहुत मेजर इम्पेयरमेंट है, साइकोसिस है. जैसे कई बार लोगों को आवाजें सुनाई देती है, कई बार लोगों को दूसरों पे शक होने लगता है कि वैसे लगता है कोई मेरे पीछे पड़ा है, कोई कुछ कर रहा है. और दिस इज साइकोसिस, दिस इज व्हाट वी कॉल डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, दैट कोई मुझे हार्म करना चाहता है. वैसे ही होता है डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी, कि मेरे स्पाउस या मेरे पार्टनर मुझसे लॉयल नहीं है, राइट.
कई बार डिप्रेशन में, सीवियर डिप्रेशन में सकता है कि मेरे अंदर की पूरे बॉडी पार्ट्स खराब हो रहे हैं, दिस इज डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म कि मैं माय बॉडी इज रॉटिंग. These, whenever there is delusion, whenever there are hallucinations, you're hearing voices, you're seeing people which are not there, this is a sign of severity कि ये बहुत severe हो चुका है. Okay. So there can be depression with psychotic symptoms, there can be psychosis itself like schizophrenia, right? इन सब चीजों में हम बोलते हैं that you seek out help of a psychiatrist, because यहाँ पे it is too severe that it won't function only with a psychological intervention or a therapy. Okay. कोई बहुत ज्यादा सुसाइडल है, राइट, कोई बहुत ज्यादा एंग्री है, एग्रेसिव है, घर की चीजें फोड़ रहा है, then we generally say कि you have to reach out. And कई बार ये होता है, people reach out to a good psychologist and the psychologist identifies that this is severe enough, this is not only going to work with therapy. So what they do is they collab with a psychiatrist, we Okay. give medicines, we do biological intervention which is medicine, दवाई जो शरीर में जाके काम करेगी. Psychologists do psychological intervention which is therapy, which would help them cope up better, which would help them understand the situations better, which would help them understand themselves better. ये दोनों जब साथ में चलते हैं तो बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं. कई बार पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब नींद नहीं आ रही है, हमेशा टेंशन रहता है, घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है. आई अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट वेरी सीवियर, इट इज समथिंग दैट इज मैनेजेबल, इट इज एट अ माइल्डर स्टेज. So I'll tell them कि I know a good psychologist, you go and talk to them, they'll Oh, help you. okay. And if it so feels कि ये नहीं मैनेज हो रहा है सिर्फ साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन से, then we might have to start medicines. Okay. Okay. Right. And then we would collab. I would talk to the psychologist कि क्या प्रोग्रेस है, आपको क्या लग रहा है. And if he thinks कि नहीं वहाँ रेजिस्टेंस है या फिर चीजें नहीं वर्कआउट करती, then it's okay, you come more. I'll start with medicine, then continue with therapy, and together we will have good results. क्योंकि it's like a it's like a land, right, a soil. अब सॉइल में अगर सॉइल ही barren है, barren लैंड है, आप कितने भी बीज डालो, कितना भी पानी डालो, उसको फर्टिलाइजर डालो, कुछ नहीं. पहले तो आपको सॉइल को फर्टाइल करना पड़ेगा, फिर आप उस बीज को नर्चर करोगे, राइट. ये दो चीजें हैं ना. तो ब्रेन इज अ मसल, राइट, लाइक एनी अदर मसल. इफ आई गो टू जिम, I have to provide some nutrition to my muscles, Right. right? And that is when it will be able to sustain that extra stress which is going to come with workout. Yeah. अब ब्रेन भी जब स्ट्रेस में चली जाती है, whenever there are stressors coming up, जॉब चली गई, ब्रेकअप हो गया, एग्जाम्स आ गई, फैमिली में कुछ इशू हो गया, all these stresses would need some extra nutrient for the brain, because then it is likely that the land, whatever fertility it had, it has given up everything to try to sustain it, but then it breaks down. Yeah. तो पहले उसको fertile बनाना पड़ता है. Sometimes in milder degree of severity, especially for anxiety and depression, Mm-hmm. only therapy works, only psychological intervention works. बट जब वो मॉडरेट या फिर सीवियर हो जाता है, तो हमको दवाइयाँ दे के पहले लैंड को फर्टाइल बनाना पड़ता है, फिर आप उस बीज को साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन से ग्रो करने की कोशिश करते हैं. Got क्योंकि वो it. जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी तो उसको मिलने चाहिए. Got it. कई बार लोग ये भी होता है दैट दे हैव सीवियर इश्यूज एंड दे गो टू द थेरेपिस्ट और टू द साइकोलॉजिस्ट. अब सीवियर इशू में क्या होता है ना, वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी और डिप्रेशन इज दैट यू आर नॉट एबल टू फोकस, यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट. Yeah. अब जब आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, आपको 1 घंटे के थेरेपी सेशन में बैठना है, वहां पे तो फोकस करना पड़ेगा, उससे बाहर निकल के आपको अप्लाई करना पड़ेगा. Yeah. तो जब आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, दिस एक्स्ट्रा एडेड 1 hour ऑफ फोकस एक्चुअली एग्जॉस्ट योर ब्रेन मोर. वो आपको और थका देता है, वो आपको और टायरसम फील होता है. Yeah. अब Yeah. पेशेंट्स आके बोलते हैं कि सर 1 घंटा तो अच्छा लगता है, लेकिन बाहर आने के बाद पूरा हफ्ता ऐसा जाता है जैसे पता नहीं, बहुत ही तकलीफ होती है. दिस इज हैपनिंग बिकॉज यू आर गिविंग अ रॉन्ग इंटरवेंशन than what is actually required. Here, if you give medicines, it would provide the neurotransmitters, dopamine, serotonin. ये सब चीजें अपने आप बढ़ेगी तो फोकस करने की कैपेसिटी बढ़ेगी. Got it. Got it. So as you said about medicines, I wanted to know, so you just simplified everything for me. Like, okay, therapy जहाँ चाहिए हम therapy provide करते हैं, medicine चाहिए medicine provide करते हैं. But then if it is so easy, then why there is so much of shame and so much of doubts and fear attached with people कि मतलब नहीं जाना, अगर जाएंगे तो हमें medicines पे डाल देंगे और medicines addictive होते हैं, हमें sleeping pills दे देंगे. And there is so much of doubts around all this. What do you have to say about it? There's so much of stigma around medicines, Stigma, honestly. yes. अभी मैं आपको देखो सिंप्लीफाई करके बताता हूँ कि ये कहाँ से आता है. जी. You might have heard it from somebody who's Okay. elder than you.
right? Most of the stigma is spread by people who have not taken the medicine. Yeah. ठीक है। दूसरी एक बात यह है कि पहले के लोग बोलते हैं, हम सुनते हैं कि ये ऐसा ही होता है, ये ऐसा ही होता है, ये ऐसा होता है, वी बिलीव कि ये ऐसा ही होता है, राइट? अब वो लोग, if somebody 20 years elder than me or if somebody elder than me has seen something like that in the past, they would come to and say कि नहीं नहीं, मैंने बचपन में मैंने देखा था, मेरे चाचा को दवाई दी थी तो वो हमेशा सोते ही थे, राइट? Yeah. तुम्हारा बचपन was 2001 2000 1990s, तब की दवाइयाँ आपकी दवाइयाँ बहुत फर्क है। डोंट यू थिंक Okay. साइंस हैज इवॉल्व्ड अ लॉट, Yeah. राइट? फर्स्ट साइकेट्रिक मेडिसिन वाज डिस्कवर्ड अराउंड 1950s, Okay. 1950, which is not even 75 years old. Okay. And in last 75 years, we have more than 100 psychiatric medicines. Okay. एक बार जब प्रोग्रेस शुरू हो जाती है, देन यू आइडेंटिफाई कि नहीं इससे ये साइड इफेक्ट होता है, इस कंपोनेंट से हो रहा है, इसको हटाते हैं तो विल हैव अ बेटर मेडिसिन, Okay. इसको हटाते हैं तो विल हैव इवन अ बेटर मेडिसिन, वी कैन रिमूव दीज साइड इफेक्ट्स एंड वी कैन ऐड इफेक्ट्स, राइट? ये पहली चीज है। तो ये पुरानी धारणाओं को लेके हम जब चलते हैं, तो देर आर चांसेस दैट वी बिलीव समथिंग समबडी हैज सेड, Yeah. राइट? दूसरी बात, बात आई नींद की। किसी पेशेंट को एंजाइटी है, क्या वो सो पाएगा? नहीं. नहीं सो पाएगा, नहीं. राइट? अब अगर मुझे उसकी एंजाइटी ट्रीट करनी है, वुड आई हैव टू टेक केयर ऑफ हिज स्लीप? Yeah. Yes, obviously, right? So I would give him a medicine which will calm down his anxiety and can help him sleep as well, Yeah. right? Yeah. So obviously there are some medicines which can lead to sleep, Okay. but there are also medicines, कोई इंसान अगर बेड से उठ ही नहीं रहा है, कॉन्स्टेंटली सोता रहता है, बहुत ज्यादा नींद आती है उसको, अच्छा. don't you think I'll have a medicine which will help him to get up, to be Yeah. active, Yeah. right? So there are medicines which can also make you active if you're sleeping extra, Okay. right? अब कई बार ये होता है कि हाँ कुछ दवाइयों से नींद आती है, एंड इट्स नॉट इवन अ साइड इफेक्ट, इट्स द इफेक्ट दैट वी वांट टू ट्रीट दैट डिसीज। Right. Yeah. क्योंकि आपको जब नींद आएगी रात को, स्लीप इज हैज अ रिस्टोरेटिव फंक्शन, इट रिस्टोर्स योर ब्रेन। Yes. So one of the first thing that gets disturbed when somebody is psychologically disturbed is sleep, Yeah. and one of the first thing which we target to start treating is sleep। क्योंकि जब नींद नॉर्मल होगी तो अपने आप दिमाग का काम करना थोड़ा और सिस्टमेटिक होगा, थोड़ा और ऑन द ट्रैक आएगा, राइट? Correct. तो Yeah. जब हम ऐसी दवाई देते हैं जिससे नींद आती है, तो हम जनरली पेशेंट को ये बोलते हैं कि आप इसको रात में लीजिए, Mm-hmm. take it at night so that you're able to sleep, so that, or if you're doing night shift, take it in the day, in the morning before you sleep, so that it helps you sleep, it doesn't have a leftover drowsiness, Okay. right? पहले की कुछ दवाई ऐसी थी जिससे ये होता था, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, राइट? बट Yeah. दैट इज नॉट द सिनेरियो टुडे। दूसरी चीज ये है, थोड़ा सा तो मैं एज अ डॉक्टर पेशेंट्स के साइड से भी बोलूंगा कि गोली देने से पेशेंट को नींद आती है, अच्छी नींद आती है, राइट? एंड व्हाट दैट पेशेंट डज इज, हम उसको बोलते हैं ये गोली आपको 5 दिन लेनी है, उसके बाद बंद करनी है। Okay. बट पेशेंट डज इज, क्योंकि नींद अच्छी आती है, 5वें दिन जब आप बंद कर दोगे तो आपको उस दिन नींद नहीं आएगी, Yeah. हो सकता है उसके अगले दिन भी नींद नहीं आएगी, Yeah. राइट? 3-4 दिन नींद नहीं आने के बाद एक स्लीप डेफिसिट एक्यूमुलेट होता है जिससे आपको नींद अपने आप आती है बाद में। Yeah. बट व्हाट द पेशेंट डज इज, डॉक्टर साहब नींद नहीं आ रही, वो नींद की गोली लिख के दे दीजिए, हाँ. और एल्स दे गो टू द मेडिकल डायरेक्टली एंड देयर लाइक भैया ये वाली गोली दे दो। So I know a patient who was given medicines like when he had an anxiety attack 25 years back, he was given one tablet. Okay. That guy continued to take that tablet for 25 years Oh my without any God. prescription. He went to the medical and उसको 0.5 का डोज दिया गया था, आज वो 5 का डोज ले रहा है, 5 mg का डोज ले रहा है। Oh my God. And now he comes to me saying कि डॉक्टर साहब मुझे बंद करनी है। When I started to taper, he says नहीं नहीं नहीं, इससे बहुत तकलीफ हो रही है, आप जो दे रहे हो उससे तकलीफ हो रही है, मुझे वही वाली लिख के दे दीजिए। मतलब मैं तो आपका ड्रग डीलर बन जाऊंगा अगर मैं आपको वही दवाई वापस लिख के दूं तो। दैट्स नॉट द वर्क ऑफ माय डिग्री, आई कांट डू दैट, Oh my God. राइट? एंड अ Yeah. लॉट ऑफ टाइम्स फिजिशियंस आल्सो राइट दीज मेडिसिंस बिकॉज दे हेल्प कम डाउन द एंजाइटी। अब गलत नहीं है, क्योंकि हर बार फिजिशियन अगर पेशेंट को बोलेगा आपको एंजाइटी, आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, कंसिडरिंग द स्टिग्मा, ही विल बी लाइक आपको क्या लगता है मैं पागल हूँ, मेरे को क्या जरूरत है जाने, Yeah. Yeah. राइट? बट पेशेंट्स कंटिन्यू टू टेक इट ऑन देयर ओन, एंड देन मौत तो नाम से ही बदनाम है गालिब। बहुत ज्यादा बदनाम है कि तुम पागल हो, तुम साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, जाओ तुम अपना इलाज करवा लो। व्हाई? आई डोंट नो व्हाई इज इट लाइक
किसी को डांटते वक्त हम ऐसा यूज करते हैं कि यार तुम्हारा तो दिमाग ही खराब है। मे बी बिकॉज मोस्टली इट्स इनविजिबल, तो हमारे पास कोई Yes. क्वांटिफाइबल नहीं है कि मतलब कोई एक्चुअल में बीमार है कि नहीं है। एंड अनदर Yeah. गुड थिंग दैट यू सेड कि मेडिसिन हैव इवॉल्व्ड अ लॉट, कि जरूरी नहीं है कि पहले अगर स्लीपिंग टैबलेट्स जिस तरह के होते थे, आजकल जरूरी नहीं है कि वैसे ही हो। Right. और बहुत इवॉल्व हुआ है, बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। लाइक आई एम ऑनेस्टली साइकेट्रिस्ट बिकॉज आई डू ऑफर थेरेपी एज वेल। मैं खुद भी ओके। थेरेपी प्रैक्टिस करता हूँ। तो कई बार ये होता है ना कि मेरे पास पेशेंट आता है, मैं उसको बोलता हूँ नहीं आपको दवाई की जरूरत नहीं है, आपको थेरेपी की जरूरत ओके। है। और कई बार पेशेंट्स खुद होके ऐसे आके बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर मुझे थेरेपी ही चाहिए, मुझे दवाई नहीं चाहिए। मैं बोलता हूँ नहीं, इट इज सीवियर इनफ दैट यू विल हैव टू टेक। सिर्फ थेरेपी को 2 साल लगाने से अच्छा है या दवाई लीजिए 2 हफ्ता, आपकी सिचुएशन अच्छी होगी, देन वी कैन स्टार्ट विद थेरेपी। या बट नो डॉक्टर, आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, यू ओनली गिव मी थेरेपी। And I'm somebody who has, I work a lot in hands with psychologists or ओके। therapists. So because I can't offer therapy to everybody, if I'm treating somebody, I can't offer them therapy, right? So या what I generally do is I give them medicine. I tell them, ये therapist है, मैं उनसे बात करता हूँ. I understood your situation how it is. They will understand your situation how it is. You, me, and therapist. तीनों मिलके treat करते हैं. ओके। So that I have to give minimum dose of medicines for minimum time and they improve better. Because जिस प्रॉब्लम की वजह से या जिस स्ट्रेस की वजह से ये ब्रेक डाउन हुआ था, वो वापस भी तो लाइफ में आ सकता है ना। या तो या rather than me just cementing this part with medicines, I या also have to work on improving your coping so that next time when the similar problem arises you are able to work it better, and that is something that therapy offers, that is something that therapy can help you with. राइट। राइट, दैट्स वेरी गुड टू नो दैट आप पहले देखते हो कि किस तरह का प्रॉब्लम है एंड उसके बेसिस पे यू डिसाइड इधर दे हैव टू गो विथ मेडिसिन और थेरेपी। जरूरी नहीं है कि कोई भी आया तो उसको मतलब इंजेक्शन लगा दिया, एडमिट करवा दिया, मेडिसिन खिला दिया एंड बस खत्म लाइफ। So I hope, No. people who are listening to it, they open up, they can go to psychiatrists like you and then they discuss what is the issue and then decide what interventions are required. And Yes. since you talk to a lot of people on daily basis, I wanted to ask, have you ever come across people who have faked it? Like, बहुत सारा मिसकंसेप्शन ऐसा भी होता है कि यार आप जितना इस बारे में ना बात करोगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। सो डू यू थिंक इट्स अ चॉइस कि अगर मैं आज बोल रही हूँ कि यार डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन, डू यू थिंक ये ट्रेंडी है और मैं ये बोल रही हूँ एंड मेरे आसपास के लोग भी यही बोल रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम जितना बात करें उतना ज्यादा बढ़ेगा, या फिर ये एक्चुअली में एक साइंटिफिक इशू है, लाइक बायोलॉजिकल इशू इन द ब्रेन है? देखिए कैसा है, अगर आपको फीवर आया, मैंने दवाई दी, जी। फीवर कम हो, हम्म। राइट? फीवर मैंने मेजर नहीं किया, आई डिडंट मेजर इट ऑन थर्मोमीटर, आई एम जस्ट मेजरिंग, आई एम जस्ट आस्किंग यू, यू फील हॉट, यू आर फीलिंग बॉडी टेम्परेचर इज राइजिंग, आई गिव यू अ टैबलेट, यू से कि नहीं अभी नहीं लग रहा है मुझे, हम्म। राइट? डू यू थिंक द टैबलेट वर्क? टैबलेट वर्क। टैबलेट वर्क, हाउ डू यू नो? फीवर हैज रिड्यूस्ड। Fever has reduced. या Your subjective sensation of what that felt earlier and what it feels now has changed, या right? या It means टैबलेट को अंदर जाके काम करने के लिए कुछ तो था, और या जब आपने वो दवाई ली तब वो चीज कम हुई। या Same is with depression. When we are giving medicines, patient who is very suicidal, who has lost interest in everything in life, who doesn't want to do anything, who just sits at one place, doesn't eat, doesn't take care of himself. धीरे धीरे gradually improve होता है, धीरे धीरे gradually बोलता है नहीं, now I feel better, I'm able to sleep better, now I'm able to spend some quality time with my family members. Now I feel like no, I don't want to end my life, I want to live. This is या subjective change which is happening with the patient, right? And and when you stop medicines, ये फिर से आ जाता है, ओके। right? ओके। Now, don't you think that there was a problem internally which was worked on by the medicines, which is scientifically discovered कि ये कैसे काम करती है, या और हमने जब वो दिया तो उसने वो काम किया तो ये चीज इंप्रूव हुई, या या राइट? नाउ जो आप बोल रहे हैं कि क्या लोग फेक करते हैं, हाँ कई बार लोग फेक करते हैं, because there are so many benefits that people get through mental illnesses, there are so many things that they are not supposed to do. In the court of law, a person, हम्म। a murder happening under the pretext of mental illness, somebody who is killing somebody without knowing what they are actually doing out of an illness would not be considered to be responsible for it, या right? So कई बार लोग फेक करते हैं,
But then there are also modalities for us to identify कि ये फेक कर रहा है या नहीं. Right. राइट, हमें भी तो समझ में आता है कि ये जो बोल रहा है उससे इसका डिस्ट्रेस मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, फैमिली मेंबर्स की हिस्ट्री क्या आती है. वार्ड में हम पेशेंट को कई बार ऑब्जर्व करके देखते हैं कि व्हाट इज ही सीइंग एंड व्हाट इज ही बिहेविंग, डज दैट मैच, डज इट रियली लुक लाइक दैट. And there are other psychological tests which we can do to identify what exactly is the scenario. There are blood investigations, there are neuroimaging, MRI, CT scan, बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं just to identify that somebody is faking it, Okay. Okay. right? And क्योंकि आजकल गूगल पे सब अवेलेबल है, तो अगर मैं देख लूँ, राइट, कि हाँ हाँ जी ये सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन में, एंड आई गो एंड टेल द डॉक्टर एग्जैक्टली एवरीथिंग सेम कि हाँ. हाँ मुझे ये हो रहा है, डॉक्टर लाइक अच्छा अच्छा ये तो सब टेक्स्ट बुक में मैच होता है एग्जैक्टली एज इट इज, राइट. जैसे कि हाँ ठीक है एडमिट हो जाओ, लेट्स गेट यू स्टार्टेड ऑन ट्रीटमेंट. But gradually, and that's why generally when we treat a patient, we take history from informants, family Hmm. members, spouse, partner, friends, कि आपको इनके बिहेवियर में क्या अलग लगता है. And sometimes, a lot of times, there are fishy stories when somebody is trying to fake it. So generally, I think the job of a psychiatrist is half doctor, half detective, something like that. क्योंकि हमको वो भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है. It becomes medical legal a lot of times. Yeah. Yeah. And क्या बोलने से प्रॉब्लम होता है? नहीं, बोलने से अवेयरनेस बढ़ती है. अगर Yeah. मुझे कोई आके बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे ना बहुत डिप्रेस्ड फील हो रहा है, Yeah. आई वुड फर्स्ट आस्क हिम व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ डिप्रेस. क्योंकि मैं जब डिप्रेशन बोलता हूँ मैं क्लिनिकल डिप्रेशन की बात करता हूँ, इट्स अ डिसीज. बट एक इंसान जब डिप्रेस्ड बोलता है तो शायद से ही इज फीलिंग सैड, ही इज फीलिंग डल, ही इज फीलिंग लो, ही इज फीलिंग लाइक he doesn't want to live, he is feeling like he's not enjoying life. There can be so many meanings behind it. But the criteria of depression to meet, it has to be at least 2 weeks that the person is feeling like that. तो यहाँ के बोलता है कल रात से बड़ा डिप्रेस फील हो रहा है बिकॉज मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से बात नहीं कर रही है. I'm like, okay, understandable. आई थिंक आपको सैड फील हो रहा है, इट्स नॉट डिप्रेशन, राइट. Okay. तो एक there's a positive side to it that people are willing to talk about it Mm-hmm. because that awareness is spreading. But Yeah. there's also a negative side to it that people are very loosely using that term, Yeah. Exactly. right? And it is something like अभी आप ये नहीं बोल सकते कि अब से 420 is a legal कलम, राइट, सेक्शन Right. 420. Right. हम बोलते हैं ना कि ये इंसान बहुत 420 है. हाँ. अभी आपने उसको लूजली यूज कर लिया क्योंकि आपको पता है, राइट. सो दिस इज द सेम थिंग दैट इज हैपनिंग. वी कांट रियली से कि नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हो, आपने ऐसा नहीं बोलना चाहिए. हाँ, पहले जब कोई कॉमन नॉलेज में चीज आएगी तो उसका बहुत ज्यादा यूज होगा, फिर हम धीरे धीरे उसको चैनलाइज कर पाएंगे, फनल कर पाएंगे. इट्स गुड दैट यू आर सेइंग डिप्रेशन, लेट मी नाउ टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इज डिप्रेशन, Yeah. so that next time you don't end up going and telling somebody I'm depressed, you end up saying that I'm sad. Yeah. Yeah. So correct. So you spoke about talking to family members. So is it very often that you have to talk to family members? And if you do you also feel ki they also come with a lot of misinformation regarding mental health? And Yes, they do. also, yeah. And also, if I am someone who is going through something, how should my family members support me? देखिए बहुत सारी चीजें होती है. when we talk about illness, we talk about something called as a biopsychosocial model. Okay. There are three factors which lead to genesis of a disease, genesis of an illness. एक है बायोलॉजिकल, Okay. कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, आपको कोई ऑर्गेनिक डिसीज है, ब्रेन डिसीज है, या आपको जेनेटिक्स है कि घर में फैमिली हिस्ट्री है. there is a higher chances that you are likely to develop that disease. Not necessarily that you will, but there are higher chances. इसके साथ में आ गया साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स, एग्जाम स्ट्रेस, ब्रेकअप हो गया, जॉब लॉस हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया, या कुछ कुछ मेजर साइकोलॉजिकल इश्यूज हो गए, कंफ्लिक्ट्स हो गए, झगड़े हो गए. तो ये जो पहले से एक सीड है वो जर्मिनेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. एंड Okay. देन देयर इज सोशल. सोशल में क्या होता है कि आपको फ्रेंड सर्कल नहीं है, सपोर्ट ग्रुप नहीं है, यू डोंट हैव एनीबॉडी टू गो एंड टॉक टू, यू आर लिविंग इन एन एनवायरनमेंट वेयर यू आर, देयर इज बायस टुवर्ड्स यू, देयर इज जैसे रेसिज्म हो रहा है या फिर पार्शलिटी हो रही है, यू फील आइसोलेटेड, यू फील अलोन. ये सब चीजों में, राइट, और यू गोइंग थ्रू अ सोशल क्राइसिस लाइक इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया, या फिर सोसाइटी में दंगे हो गए, अर्थक्वेक हो गए, ऐसा कुछ होगा, राइट. तो Okay. इन सब चीजों में क्या होता है ना
कि ये तीनों फैक्टर्स साथ में आके एक डिसीज को शेप देते हैं. दैट्स व्हाई एवरी पेशेंट दैट वी सी, उनमें ये तीनों फैक्टर्स अलग अलग होता है. Okay. Right. Okay. That's why every patient that we see, they would require a different intervention. They would require a different way of treating. They would require a different, even though medicine might be same, but therapy का approach अलग हो सकता है, social approach अलग हो सकता है. Okay. And our immediate society is our family, है ना? तो अगर किसी बच्चे को बचपन से घर में he's not loved, he feels unloved, he's not paid attention to, his emotional needs are not catered, there is a likelihood that he would develop some kind of loneliness in himself, Hmm. which can predispose him to later developing depression or anxiety. So, or family members कई बार play a very major role in helping people recover. Because if I initially they feel like नहीं, ये तो बहुत लेजी है, ये काम ही नहीं करता है, इसको बोलो तो हमेशा इसके पास में बहाने होते हैं, ऐसे ही करता है. कई बार उनको उनको बैठा के समझाते हैं कि देखिए, ये जो हो रहा है कि एक बीमारी है. इसको आप जितना ज्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा फोर्स करने की कोशिश करेंगे, इट विल बिकम काउंटर इंट्यूटिव, काउंटर प्रोडक्टिव. किसी फ्रैक्चर्ड इंसान को आप ये नहीं बोल सकते कि नखरे कर रहा है, भाग नहीं रहा है, नहीं, पर रेस में तो फर्स्ट आ जाता डॉक्टर साहब. राइट. नहीं Right. करेंगे ना. Yeah. रेस मैटर नहीं करती, इसकी रिकवरी अभी मैटर करती है. उसी Yeah. तरीके से आप ये नहीं बोल सकते कि डॉक्टर साहब पढ़ता ही नहीं है, फोकस ही नहीं करता है, दिन भर फोन चलाता है. दिन भर फोन चलाता है तो एक कॉमन कंप्लेन. एंड व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज constant use of phone is a sign of underlying anxiety or underlying depression at times. Okay. Because आप वो एक loneliness को भरने के लिए कुछ तो यूज करोगे. Yeah. कि आप अगर अकेले बैठे हो तो वो सब ख्याल एक साथ में दिमाग में आ जाता है. Yeah. And to shut that down, you're using that external noise to shut it down. Right. So when we explain the family members that what you need to do, you have to help him recover. You have to have a caring approach to this patient. You need to be watchful of his needs, of his emotional needs. Right? He's not blaming you. He's not saying कि आपकी वजह से ये हो रहा है or things like that. That's his own perspective and he doesn't know how to explain it because we are never taught how to express our emotions since childhood. Yeah. कोई हमें ये नहीं बताता कि आपको बताना कैसा है. Yeah. मम्मी बोलते हैं कि नहीं, मैं हार गया, मैं तो लूजर हूँ. मुझे फील क्या हो रहा है क्योंकि मैं हार गया, ये कोई नहीं बताता. Yeah. ये मैं कैसे बोलूँ कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा. मुझे पता है कि मैं रिकवर कर जाऊंगा, बट इस मोमेंट में अभी आई एम फीलिंग सैड दैट आई लॉस्ट. एंड आई थिंक इट्स ओके दैट आई फील सैड बिकॉज इट्स अ लॉस. आई एम सपोज टू, आई एम अलाउड टू फील सैड. अरे रो मत, कुछ नहीं होता, छोटी छोटी चीजों पे कार होता है. दिस इज initial reaction that comes. So we are not given a space to express our emotions, Right. right? और इस वजह से कई बार they don't know how to open up to their parents. They don't know how to open up to the family members. तो कई बार हमको फैमिली मेंबर्स को ये साइको एजुकेट करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि देखिए, ये बीमारी है, दिस हैज नथिंग टू डू विथ यू, यू डोंट हैव टू टेक इट पर्सनली. You have Yeah. to help him, and they also come with their own baggages, they also come with their own issues, their own past, their own emotions, their own suppressed emotions at times. राइट. तो कई बार और हमने ये भी देखा है कि इन फैमिलीज वेयर देयर इज मोर एक्सप्रेसिव एनवायरनमेंट, वेयर देयर इज वार्मथ, लव फॉर द concern for the person who is affected, they recover faster, they recover better than the families where there is constant nagging, constant finger pointing कि तुम ही कर रहे हो, तुम्हारी गलती है, नाटक करता है. सो Yeah. ये एनवायरनमेंट का फर्क जो है ना, इट हैज बीन स्टडीड एंड इट हैज बीन फाउंड दैट a family where there is a more conducive environment, आपको ऐसे टाइम में कोई भी सपोर्ट करने के लिए मिल जाए. लाइक एट टाइम्स आई सी हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं, फैमिली नहीं रहती है साथ में, एक रूममेट रहता है, रूममेट को लेकर हम बोलते हैं कि नहीं, आप अकेले आए हो, हम आपको ट्रीटमेंट इनिशिएट नहीं कर सकते बिकॉज लीगली इट्स जनरली नॉट अलाउड that Okay. we don't. You have to understand the whole situation, right? A Okay. college student directly walking in, there can be so many things behind background में जो हमको नहीं पता, which जी. they're choosing not to express. So it would become problematic if I prescribe a medicine and they are misused. I don't know what is going to happen. तो हम जनरली बोलते हैं कि आप किसी फ्रेंड को लेके आइए, आप किसी को लेके आइए. फ्रेंड आता है, रूममेट होता है. तो कई बार now because of this awareness about mental health, the roommates would ask me, doctor, what should I do so that he feels supported, so that she feels supported? Nice. How can I help her cope up with this? It feels really nice because yeah, they are their immediate environment, and that a person who is asking this question, I know this person is good for the other person's mental health.
क्योंकि उनको उतना कंसर्न है, यही बताता है कि दैट पर्सन इज गोइंग टू प्रोवाइड दैट environment जी for जी। them to express, for them to speak out their mind, for them to feel their emotions. नाइस। Okay, so Dr. Rathi, as you spoke about, family members thinking that यार ये तो lazy है, ये तो रो रहा है वगैरह वगैरह. So, but it's not just the family members. I think it's the friend circle, it's the co-workers also at times. So, अगर मैं बात करूँ as a professional, working professional, and if somebody is coming out and saying that, hey, I'm going through an issue in my life. So, I think the perception of people around them changes a little. कि यार मतलब ये शायद सारा काम नहीं कर पाएगा, मे बी थोड़ा सा वीक है इंसान, मे बी दे विल नॉट बी एबल टू हैंडल स्ट्रेस दैट मच. तो थोड़ा सा ना परसेप्शन चेंज होता है, आई थिंक इस वजह से लोग ज्यादा इस बारे में बात नहीं करते हैं कि आपको फिर वीक देखने लग जाएंगे लोग. सो इज इट दैट कि आप रियल में वीक हो, और इज इट समथिंग कि यार मतलब बाद में चेंज हो सकता है ये चीज? I think before we call it weak, what is mental strength depends person to person. Right? ओके. जो मेरी स्ट्रेंथ होगी वो आपकी नहीं होगी शायद. आपकी कुछ अलग हो सकती है कुछ चीजें, मेरी कुछ चीजें अलग हो सकती है. Right? It's just like I might not be good at you know uh, calculations, or I might not be good at finances and accounting. You might be good at it. ये तो एक इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ सबकी अलग अलग होती है. जी. सेम तरीके से इमोशनल स्ट्रेंथ भी होती है. Somebody might be very empathetic, somebody might be very good at conversation, somebody might be very good at understanding without being said, somebody might be very good at putting forward their words, putting forth what they feel and how they feel. तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, आप जो बोल रहे हैं बहुत सही बात है. इट इज रियली ट्रू दैट देयर इज अ मिसपरसेप्शन दैट स्टार्ट्स हैपनिंग कि नहीं ये वीक है. बट प्रॉब्लम ये होती है ना कि वो जो वीकनेस का आप टैग दे रहे हो वो आप कैरी करते हो. राइट. अगर मैं बोलूँ कि आई कांट लिफ्ट दिस 5 books दैट यू हैव केप्ट ऑन दी बोर्ड बिकॉज मेरे ना हाथ में दर्द हो रहा है, तो मुझे 2 महीने बाद कोई वापस से नहीं बोलेगा कह रहे नहीं नहीं इसको तो दर्द होता है इसको मत उठाने देगा. बिकॉज ग्रेजुअली माई चेंज इन परफॉर्मेंस, माई चेंज इन एक्टिविटीज वुड बी नोटिसेबल. राइट. वो कैरी नहीं करता कि नहीं ये तो एक हाथ से गॉन है, ये इसका हाथ काम नहीं करता, ऐसे कोई नहीं बोलेगा. या. But when it comes to accepting, acknowledging your emotions, I'm not feeling well, or things are not going so good in my life right now. I'm getting anxiety, or I don't think I would be able to work out this much because I'm very tired mentally. I'm very exhausted, and there's so much going on in my life right now. So I won't be able to do this. लोग बोलते हैं वीक है, और फिर लोग उसको कैरी करते हैं. मतलब जितने साल वो इंसान वहां पे काम करेगा, ये एक फोकलोर बन जाएगा कि नहीं नहीं ये थोड़ा सा इससे काम नहीं होता है, थोड़ा सा ऐसे, ये थोड़ा सा वीक है. क्या वो सिचुएशन नहीं था मेरे हाथ का दर्द, वैसे ही ये मेंटल पेन क्या ये सिचुएशन नहीं हो सकता है. या. एंड वंस यू फॉर्म दैट नोशन अबाउट समबडी, even if they are able to perform, even if they are able to do things well, even if they are able to uh, reach the ceiling, आप उस लेवल को कैरी करते हो, इसलिए आप उनको वैसा देख ही नहीं पाते हो जैसे वो एक्चुअली है. आप उनको उस पर्सपेक्टिव से देखते हो जो आपने उनको डिफाइन कर दिया. इसको हम लेबलिंग बोलते हैं. दिस काइंड ऑफ लेबलिंग, it is important for us to be aware that we are doing it. या. Right. It's not about what the other person is going through, but it's about, huh, okay, you're going through a tough patch, you want some space, you want some help, let me provide you that, rather than me calling you weak and then saying कि नहीं नहीं तुमसे नहीं होगा तुम रहने दो. That's not me providing you support. Right. अगर imagine this example, अगर कोई बच्चा लॉन्ग जंप में जंप मारते मारते गिर जाता है, क्या तुम बोलते हो नहीं बेटा लॉन्ग जंप तो खेलो ही मत, तुम गिर जाते हो. नहीं बेटा बास्केटबॉल तो खेले मत, तुम्हारे नाक पे बॉल लग गई थी. नहीं बेटा क्रिकेट तो खेले ही मत, तुम्हारे घुटने फूट गए थे. You don't. You put या. them through it again so that they are able to conquer that, so या. that they are able to, overcome those challenges. Same thing is happening here as well. They might be going through a tough patch that hampers their productivity at this time point. जरूरी नहीं कि बाद में भी होगी. And I think इसके लिए sometimes it's important for us to look inside, look within, या. right? Because we don't want to be called weak. We end up seeing things as in terms of black and white. कि या. या तो ये वीक है या तो स्ट्रांग है. बट इट्स अ कंटिन्यूम.
neither am I strong or weak at everything. There's some things I'm 80% good at, some things I'm 20% good at, some things I'm great at, fantastic. I know this is my strength. I know. और ऐसे ही in workplace also we need to create that empathy, create that space. You sit with them, talk to them, identify what can I help you, how can I help you in this situation that you're going through right now. अगली बार वो इंसान खुद आके आपसे बात करेगा क्योंकि उसको पता है कि नहीं, दिस इज अ पर्सन वेयर आई कैन एक्चुअली एक्सप्रेस, वेयर हु इज विलिंग टू हेल्प मी आउट. एंड व्हेन यू गो थ्रू अ टफ पैच, that person would be there for you. Absolutely, absolutely. So I think these days people are opening up more, than earlier days. So I personally feel कि ऐसा बोला जाता है कि यार ये तो आजकल इन है, ट्रेंडिंग है, इस पे बात करना कूल है वगैरह वगैरह. मुझे ऐसा लगता है कि आजकल थोड़ा सा एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं बढ़ा है, जिसकी वजह से Right, हम लोग खुल के बात कर पा रहे हैं. So for right. example, आज my manager is very supportive. So if I tell him कि okay, I'm not having a good mental health day, he'll be like okay, take it off. बट अगर यही मैं 5-10 साल पहले बोलती तो शायद मैं नहीं बोलती कि आई एम हैविंग अ बैड मेंटल हेल्थ डे. मैं बोलती कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, आई हैव अ फीवर सो आई वांट टू टेक एन ऑफ. सो आई थिंक इट्स रियली गुड टू सी दैट पीपल आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड एक स्पीक एक मोर ये भी अबाउट. एक ये भी एस्पेक्ट है इसके पीछे, that there is so much research going on around mental health at workplace also, which says that when you are in a better mental health, you're more productive. या देखिए, कंपनी को आपसे प्रोडक्टिविटी चाहिए, राइट. 10 साल पहले अगर आप बोलते कि नो, आई एम नॉट इन अ गुड शेप, देन आई डोंट थिंक आई कैन डू, तो कंपनी वुड बी लाइक, हाँ हम भी नहीं है लेकिन हम तो आगे काम कर रहे हैं, तुमको क्या प्रॉब्लम, राइट. सो बिकॉज एंड देन दिस ये मेंटालिटी तो बहुत ही कॉमन है कि हमने सहा है तो तुम भी सहो. एक करेक्ट. सास बहू से लेके सीनियर जूनियर से लेके मैनेजर एम्प्लॉय तक सब जगह यही चलता है, राइट. बट जब वो चेंज आप शुरू करते हैं, नाउ दे नो कि इसको बुला भी लूँ तो ये इतनी प्रोडक्टिव रहेगी नहीं, तो फिर आके भी क्या फायदा, right. And there are workplace employee wellness programs running, या because now they know कि employee wellness is what converts into productivity. So it is okay to talk about it, and it is okay to allow these things to happen, because then when we support them in their low phases, there are times that they will come back stronger, and they are willing to give more to the company. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. So, kind of people that come to you, do you usually see, they are more of like students, or do you find more working professionals coming to you, or do you feel any kind of, pattern in the demographics of people, be it age or be it working professionals or students? देखिए, आई हैव वर्कड इन प्राइवेट सेटअप्स, आई हैव वर्कड इन गवर्नमेंट सेटअप्स. तो Yeah. गवर्नमेंट सेटअप में तो एक डिफाइंड लोअर क्लास के लोग आते हैं, बिकॉज द सर्विसेज आर फ्री देयर, Ah, okay. राइट. लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, बिकॉज द सर्विसेज आर फ्री. Okay. आपको कई जगह पे आपको 10 रुपए की पर्ची लेनी पड़ती है फॉर रजिस्ट्रेशन, कई जगह पे आपको वो भी नहीं लेनी पड़ती है, उसका भी पैसा नहीं देना पड़ता. एवरीथिंग फ्रॉम मेडिसिन टू इन्वेस्टिगेशंस, एवरीथिंग इज फ्री. Okay. ठीक है. Coming to age group, I see people from the age of 1-2 years to 90, 102 years also. सो Okay. एज में हर एज के अपने अपने इश्यूज हैं, हर एज के अपने अपने चैलेंजेस हैं. सो दैट्स व्हाई वी सी एवरीथिंग. वर्किंग प्रोफेशनल जनरली प्रेफर टू गो टू अ प्राइवेट सेटअप, because they think कि गवर्नमेंट सेटअप में अच्छा नहीं लगता है. वी ऑल्सो हैव सम प्रीकंसीव्ड नोशंस अबाउट हाउ गवर्नमेंट सेटअप ऑपरेट्स, क्या होता है, कैसे होता है, दैट काइंड ऑफ थिंग. ऑल्सो कई बार उनको इंश्योरेंस कवरेज रहता है, सो दे माइट प्रेफर गोइंग टू अ प्राइवेट सेटअप वेयर things are covered, where there are more investigations that they can get done, and the quality of healthcare is also different. So I see farmers, I see rickshaw pullers, I see housewives, I see daily wage laborers, I see sometimes even managers, HR professionals, I see students of different streams, school students, first standard, second standard के बच्चों से लेके, तो प्रेग्नेंट फीमेल्स, लैक्टेटिंग फीमेल्स, ओल्ड एज होम में रहने वाले लोग, या जो एक होम फॉर होमलेस रहता है, उसमें कई बार रास्ते पे लोगों को रैक पिकर्स मिल जाते हैं दैट माइट बी मैनिफेस्टिंग साइंस ऑफ मेंटल इलनेस, तो उनको एनजीओस के जरिए लोग लेकर आते हैं. ऐसे एवरीथिंग. तो ये जो एक लोगों का मानना है कि नहीं, ये डिप्रेशन डिप्रेशन जैसी बीमारी ना हाई क्लास, हाईली एजुकेटेड लोगों की है, और अनएजुकेटेड लोगों को, जो जो दिन भर का अपना कमाते खाते हैं, उनको तो ऐसा कुछ नहीं होता. तो बहुत ही गलत धारणा है. गो टू एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल,
You will find people जिनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, and the reason behind that is that they are suffering, right? Exactly. That they are not able to work, they are not able to function. Their family is broken because of all of this. There are addictions, alcohol use because of all of this happening. मैंने ऐसे भी लोग देखे जो उनको इतनी ज्यादा एडिक्शन है कि वो घर की चीजें तक बेच देते हैं just to be able to buy alcohol. ओके, तो जैसे आपने कहा कि ऐसे कोई डेमोग्राफिक्स नहीं है कि मतलब इस क्लास के ही लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं या फिर हाई क्लास के लोग ही ज़्यादा सफ़र करते हैं वगैरह-वगैरह। वी रिसेंटली देयर वाज़ दिस क्रिएटर्स अवार्ड वेयर इवन आवर प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड दिस इश्यू एंड ही सेड कि बहुत काम करने की ज़रूरत है मेंटल हेल्थ पे अभी। ना सिर्फ शहरों में बल्कि गाँवों में भी, छोटे गाँव में अगर एक बच्चा है जो एक मेंटल इलनेस से जूझ रहा है, तो उसको कैसे हम सँभालें और उसके पेरेंट्स को क्या बताएँ कि कैसे दे हैव टू डील विद दीज़ थिंग्स। सिमिलरली अगर कोई पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है, उसके फैमिली मेंबर्स को हम किस तरह का एजुकेशन दें कि उनका मेंटल हेल्थ भी सही रहे बिकॉज़ इट्स नॉट अबाउट दैट पर्सन themselves, it's about their family also. Whenever there's one person having any psychological issues in the family, it affects the whole family. Yeah. Right, सबको उसका असर पड़ता है, and it is not only about that person. Then we have to talk to everybody, and we have to make everybody understand कि क्या हो रहा है, what you need to take care, and a lot of times it's also about us identifying the strengths of that person. क्योंकि हम बीमारी बोलते हैं तो हम इतना वीकनेस पे फोकस करते हैं कि हम भूल जाते हैं कि वो एक इंसान है. This is just a part of what is going on right now, but he has his own strengths, she has her own skills, that is something very unique to her, that is something very special for her. तो कई बार हमको वो भी बोलना पड़ता है कि आप इस पे emphasize कीजिए, and this person can have reached so much if you just stop expecting him to do this particular thing. Yeah. Right, हो सकता है ना कि कोई कोई बच्चा है who is having lower intelligence, is so good at sports, but आप उसके पीछे पड़े कि डॉक्टर साहब पढ़ता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है. कई बार हमको फैमिली मेम्बर्स को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि नहीं, वो नहीं पढ़ेगा, बिकॉज पढ़ने के लिए जो कॉग्निटिव स्किल्स लगेगी, जो इंटेलिजेंस लगेगा, उतनी उसकी कैपेसिटी शायद नहीं है. But if you Mm. simplify things for him, if you put him into work where he's told what to do, or if you put him into activities where he's gaining pleasure out of it, like sports or games or things like that, या फिर आप उसको छोटी मोटी दुकान डाल के दे दीजिए, या give him a job where he's told what he has to do and he's good at doing what he's told, he would succeed. He would earn for himself. He would be able to be capable. There's so much that a person can do if we only focus on their strengths. We are able to tell the family members, tell the person कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं. Right, right. So every mind is different. Every mind is different, and everybody who has mind can have a mental illness. Okay, so So there is nothing like कि इस कैटेगरी के लोग ही are more prone to mental health or something नहीं, like that. बिल्कुल भी नहीं. अगर आपको माइंड है, मुझे बताइए किसका हाथ फ्रैक्चर हो सकता है? जिसका हाथ है उसका हाथ फ्रैक्चर हो सकता है. It Yeah. is just like that. Everybody, every child, from the moment they are born to every old age person till the time of their last breath, they carry a mind. There are emotions in there. There are thoughts going on in there. अब ये तो नहीं सोचता ना दिमाग, ये तो नहीं सोचता ना कि नहीं, मैं भगवान देते टाइम ये तो नहीं सोचता कि नहीं नहीं ये अमीर है, इसको ही अपन दिमाग देंगे, ये गरीब है इसको हम दिमाग नहीं देंगे. ऐसा नहीं होता. जी, जी. एंड देन अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज हो भी तो जरूरी नहीं है कि इट्स प्रोलॉन्ग्ड फॉर द एंटायर लाइफ. इट कैन बी क्योर्ड एंड यू कैन कम आउट. राइट, देयर आर लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज दैट कैन बी क्योर्ड 100%, अगर आप ठीक से दवाई ले, ठीक से ट्रीटमेंट ले. कई बार पेशेंट्स ये करते हैं कि उनको थोड़ा ठीक लगता है, दवाई बंद कर देता है. हम्म. इट्स लाइक मेरा हाथ, डॉक्टर ने 40 दिन का प्लास्टर लगाया, 10 दिन बाद मैंने बोला कि पेन नहीं हो रहा, मैं निकाल दूं उसका. ऐसा नहीं होता. आई हैव टू कंप्लीटली क्योर इट, कंप्लीटली फिक्स इट, कंप्लीटली मेक इट वर्क, मेक इट रीच द प्रीवियस स्टेट. और हम पेशेंट को बोलते हैं कि हम आपको 6 महीने से 9 महीने तक आपको शायद दवाई लेनी पड़ सकती है, डोंट स्टॉप इट इन बिटवीन. बट दे स्टॉप. द मोमेंट दे स्टॉप, द डिसीज रिकर्स. द मोमेंट डिसीज रिकर्स, पहले 5-6 1-2 हफ्ते उनको अच्छा लगता है, 5-6 दिन अच्छा लगता है, देन वो एकदम चाहते बोलते डॉक्टर साहब पहले जैसा ही हो रहा है. तो मैं पूछता दवाई ली? नहीं डॉक्टर साहब अच्छा लग रहा था तो मैंने बंद कर दी. एंड नाउ if I had stabilized him on a higher dose, now I have to start from the lower dose again, तो उतना ही उसमें टाइम जाएगा, उतने उनका टाइम, प्रोडक्टिविटी जाएगी, और उतना उनका इम्पेयरमेंट फिर से होगा, उतना उनको फिर से वक्त देना पड़ेगा चीज़ों को स्टेबलाइज होने के लिए. एंड एट टाइम्स देन इट गेट्स फ्रस्ट्रेटिंग फॉर पीपल. तो वो बीच बीच में गोली लेते हैं, छोड़ देते हैं, लेते हैं, छोड़ देते हैं. देन it can become a problem which is, क्योंकि as long as there is
a disease process going on in the brain. It will affect the brain, parenchyma, brain tissue, the receptors where the medicines are acting. तो मुझे फिर ज़्यादा डोज देना पड़ता है, मुझे फिर ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए देना पड़ता है। कई बार फिर ये होता है कि उनको they have to take lifelong medicines. They have to take it for a very long time because every time they stop, there's a relapse. Yeah. And ये भी होता है कई बार कि लोग अच्छे से दवाई लेते हैं, रिकवर हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, then they don't have to ever take it again in life because they also realize how to work on their thoughts, their emotions, how to take care of stress. They have realized कि नहीं, पिछले बार मैंने ये गलती की थी, उसके वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, इस बार I have to prioritize myself, इस बार I have to prioritize my mental health. And there's a lot of learning that comes out of this, so they recover also. There are a lot of patients whom I treated with medicine, with therapy, and now they're off medicines. They took therapy for a while, then they're off therapy, and then they're like, ठीक है, अभी सब सही चल रहा है. Now I know how to manage my emotions. Now I know how to take care of myself. That breakdown happened. It happened. I had to take it. I took it. I'm glad I took it because that helped me to recover. That helped me to reach where I am. अगर मैं नहीं लेती तो शायद मैं वहीं पे रहती. Yeah. कुछ बीमारी ऐसी है जिसमें आपको लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ लेनी पड़ती है. It is like something like schizophrenia or Mm. a very somebody who has had multiple suicidal attempts. We don't want to take risk. So we generally say कि नहीं आपको लेना पड़ेगा because that helps you to curb that instinct, curb that impulse to kill yourself. And that medicine helps them have a good life. Yeah. Just because you're on medicine doesn't mean your life is bad. That medicine helps them to wake up on time, take care of family, spend time with family, go out to work, be productive, take care of self. एक दवाई ही तो लेनी है आपको. It's something like diabetes or hypertension. अगर आप दवाई लेंगे, शुगर कंट्रोल में रहेगी, you'll be able to have a normal life. Got it. Got it. Yeah. So I think it's very important to take psychiatric medicines as seriously as we take the other medicines as well. Be it like, duration or the dosage. As you Yes, said कि लोग बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं अपने हिसाब से. right. Yeah. Understood. Great. I think we have reached the end of the episode today. Dr. That I am so thankful to you. You gave us so many insightful ideas, so many thoughts, and the way you compared so many things to our physical reality that will help us, understand our invisible battles a little more. So thank you so much for your time Thank you on so a much, Sunday. Palak, for having me over and for making me a part of this wonderful discussion and wonderful idea of yours. Thank you so much for your time on this Sunday. I hope you have a really great day and we will catch up soon again. Sure. Looking forward to it. Thank you so much. Have a good day. Yeah, take care. Thanks. Bye bye. Bye.